Hello everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we are going to make this tic-tac-toe or X and 0. It's very easy to make. See, this is how it is. You can play. So I'm sure you're going to love it and your kids will love it too. So let's get started. So first we have to make a square like this. ओके वी हैव टू मेक अ स्क्वायर लाइक दिस. हमें ऐसा स्क्वायर तैयार करना है जो हमारा बेस होगा, जहाँ पे हम खेल सकते हैं. तो ये हमें तैयार करना है. ये आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो, जिस साइज़ का आपको चाहिए उस हिसाब से. सो यू कैन मेक इट लार्जर और स्मॉलर एज पर योर चॉइस. सो नाउ वील स्टार्ट मेकिंग द बेस फर्स्ट एंड देन वील मेक द सर्कल्स. सो वील मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट. सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे. And then I'll be chaining 40 because that's the size I want. You can increase or decrease the number of foundation chain as per your choice. तो मैं 40 chains बनाऊंगी. आप अपनी foundation chain increase और decrease कर सकते हैं. उस पर डिपेंड करेगा जितना बड़ा आपको अपना स्क्वायर चाहिए. तो जितना बड़ी आपकी foundation chain होगी उतना ही बड़ा आपका स्क्वायर बनेगा. So you can make the foundation chain according to your preference. I'll be chaining 40. After making 40 chains, what you have to do is, or after making how many ever chains that you have made, जितनी भी chains आपने बना ली अपनी foundation chain में, उस हिसाब से बनाने के बाद जितना बड़ा आपको चाहिए उसके बाद आपने 3 extra chains करनी है. So we'll be chaining 3 extra chains. 1, 2 and 3. Now skip these 3 chains, go into the 4th one and make a double crochet stitch. तो हम 3 chains को यहाँ पे skip करके 4th वाले में जाके एक double crochet stitch बनाएंगे. Then 1 double crochet stitch in the next. एक double crochet stitch next वाली में बनाएंगे. 1 double crochet stitch in the next. एक next में बनाएंगे and so on until you reach the end of your foundation chain. तो इसी तरीके से हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशे स्टिच करते जाना है तब तक जब तक कि आप अपने फाउंडेशन चेन की एंड पे नहीं पहुंच जाते. And this is what you have to do for row 1. So I'll complete row 1 and then I'll show you what to do next. तो इसी तरीके से आपने एक एक डबल क्रोशे स्टिच हर एक चेन में करते जाना है एंड तक, और फिर मैं आपको बताऊंगी आपने नेक्स्ट रो में क्या करना है. सो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर रो 1, जब आपने रो 1 कंप्लीट कर ली है, आफ्टर दैट यू हैव टू चेन 3. 1 2 3 चेन 3 करेंगे एंड देन यू हैव टू टर्न योर वर्क. फिर अपना वर्क टर्न करेंगे एंड देन स्किप दिस चेन 3 एंड यू हैव टू वर्क फ्रॉम द फर्स्ट stitch over here on top of the first stitch. तो इस first stitch पे हम एक double crochet stitch करेंगे. So we'll work a double crochet stitch on the first stitch here, which is the last stitch of the previous row, and 1 double crochet stitch in the next stitch. एक double crochet stitch हमने next stitch पे किया and then 1 double crochet stitch in the next stitch and so on until you complete the रो. तो इसी तरीके से हमने एक एक डबल क्रोशे स्टिच करते जाना है एक एक स्टिच पे. तो वी हैव टू डू 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस एंड यू हैव टू रिपीट रो 2 अंटिल यू गेट योर स्क्वायर रेडी. तो जब तक आपका स्क्वायर रेडी नहीं हो जाता आपने रो 2 को रिपीट करते जाना है. और एक बार आपका स्क्वायर रेडी हो गया तो उसके बाद आपने चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर देना है एंड फिर उसके बाद हम सर्कल्स बनाएंगे. So once you complete your square, you reach the desired length and you see that your square is looking proper. You have to chain 1 and fasten off, and then we can begin making our small circles. So this is how you have to, I'm so sorry, it's so slippery. This is how you have to just keep doing and you have to make the square. Once your square is ready, once you've made your square, you have to just chain 1 and fasten off, and then you can weave in the ends using a tapestry needle. And then your square is ready, your base is ready. base आपका ready हो जाएगा. इसी तरीके से जब आप square बना लेंगे तो आप chain 1 करके fasten off करेंगे and फिर वो उसको weave in कर देंगे tapestry needle से. और उसके बाद हमने बनाने हैं छोटे circles. And then we have to make these small circles. We have to make a total of 10 circles like this. ऐसे हमें
10 सर्कल्स बनाने हैं. सो आई शो यू हाउ टू मेक दीज सर्कल्स नाउ. तो मैं अभी बताती हूँ आपको कि ये सर्कल्स कैसे बनाने हैं. टू मेक दिस सर्कल वी हैव टू मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट. सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे. सर्कल्स बना रहे हैं अब हम. एंड वी हैव टू चेन 4 चेन्स बनाएंगे. और जो पहली वाली चेन होगी इसको थोड़ा सा लूज बनाएंगे. सो मेक द फर्स्ट चेन अ लिटिल लूज. 2, 3 and 4. Now go into the first chain that you made and make 12 double crochet stitches in this first chain. इस first chain में हमने 12 double crochet stitches बनानी है. 1 and I'm working over the yarn tail so that I don't have to weave in the end. मैं yarn tail के ऊपर ही वर्क कर रही हूँ ताकि मुझे बाद में लास्ट में weave in ना करना पड़े. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. और फिर जो हमने पहला डबल क्रोशे स्टिच बनाया था उससे हम इसे ज्वाइन कर देंगे. सो विल मेक अ स्लिप स्टिच onto the first double crochet stitch that we made and we'll join the circle. Then chain 1, cut the yarn and fasten off. तो हमने chain 1 करके fasten off कर दी. And now you can weave in this end. See, we worked on the yarn tail here at the back. Just tighten it so that the circle is center of the circle is closed. पीछे से उसको टाइटन कर देंगे, खींचेंगे जो yarn tail होगी तो ये सेंटर क्लोज हो जाएगा अगर खुला हुआ है तो. एंड देन यू कैन जस्ट वीव इन द yarn at the back of the circle. पीछे जो सर्कल के पीछे जगह है वहां की स्टिचेस में हम इसे वीव इन कर देंगे इसी तरीके से. एंड जो भी एक्स्ट्रा बचा होगा यहाँ पे उसको हम कट कर देंगे. सो वी कैन कट द एक्स्ट्रा वन बिकॉज वी हैव वीव्ड इन अ लॉट. सो दिस इज हाउ आवर सर्कल इज रेडी. हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया है. इसी तरीके से आपने 10 सर्कल्स बनाने. यू हैव टू मेक 10 सर्कल्स लाइक दिस. एंड नाउ आवर बेस and our circles are ready. So only thing we have to do is we have to make the lines and X and zeros on the circles. तो हमें अब lines बनानी है बेस के ऊपर और इन सर्कल्स पे हमने X and zeros बनाने हैं. और जो हम एम्ब्रॉयडरी वाली थ्रेड या किसी भी नॉर्मल पतली यार्न से कर सकते हैं. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे करना है. सो आई विल जस्ट शो यू हाउ टू डू इट नाउ. सो टू मेक द स्ट्राइप्स, टू मेक द लाइन्स, इस पे लाइन्स बनाने के लिए क्या आपको करना है, पहले आपको मेजर कर लेना है कहाँ आपको लाइन्स चाहिए. अब जैसे यहाँ पे मुझे एक लाइन यहाँ से आती हुई चाहिए स्ट्रेट, एक यहाँ से. सो आई वॉन्ट वन लाइन टू कम फ्रॉम हियर स्ट्रेट and one line to come from here. Now you can even add stitch markers or you can just add a piece of yarn so that you know from where you have to start. So first I'll be making a line from here. So I'll add this piece of yarn here so that it becomes easy for me, and next piece I want it from here. Okay, so I'll add a piece of yarn here. तो मैंने दोनों जगह पे ये ऐड कर दिए. नाउ ऑन दी अदर साइड एज वेल, बिकॉज वी वांट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हमें दोनों तरफ लाइंस बनानी है. 2 लाइंस ऐसे आएंगी और 2 लाइंस ऐसे आएंगी. सो यू कैन जस्ट फ्लिप इट लाइक दिस एंड यू कैन ऐड 2 pieces ऑफ yarn here. So one I want it from here, so I'll add
the piece of yarn here. You can even use stitch markers for this. Stitch marker भी use कर सकते हो आप. And one from here. Okay, so one piece I'll be adding here. Now I've marked where I want my lines to be. So now I'll start making the lines. So first I'm making these lines over here. So we'll have to add the piece of yarn, add the main yarn color from which you want your lines to be. Make sure that if your base is of the light color, make sure the lines are of the darker color. If the base is dark, make sure the lines are light color, because it will be better if it's the case. Otherwise it will be very difficult to see the lines. तो आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपका बेस डार्क है तो आप लाइंस लाइट कलर वाली यार्न से बनाइएगा, और अगर आपका बेस लाइट है तो डार्क कलर वाली यार्न से आप अपनी लाइंस बनाइएगा. So first we'll make a slip knot. We made a slip knot. Now we want our line to start from here. So I'm going to remove this. I'm going to insert my hook from back side. Okay, पीछे से मैं अपनी hook insert करूंगी. I'll put this. See, we'll make a slip knot. We'll make a slip knot, and we have to take the loop from the back side. So we'll put our needle from the front to the back and put the loop inside and pull the loop through. तो हमने क्या किया, हमने फ्रंट से नीडल डाली, लूप को नीडल में डाला एंड वहां से पुल कर लिया. Then tighten it, and now you have to hold the working yarn under your work, and you have to just go in, and from behind you have to grab the loop and pull it through the loop that is on, like this. Then you have to again go in, from behind you have to grab and pull it through like this. तो इस तरीके से हमने straight lines बनानी है. हमने starting से सामने से हमने अंदर जाना है. ओके, पीछे से लूप ग्रैब करना है एंड उसमें से निकाल लेना है. देन अगेन विल ग्रैब अ लूप फ्रॉम बिहाइंड एंड पुल इट थ्रू. देन अगेन विल पुट द नीडल फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड पुल द लूप फ्रॉम द बैक ऑफ द वर्क, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, एंड यू विल हैव दीज लाइन्स. ओके, this is how you have to make the line completely till the end, and then the second line and the other side, both the lines. This is how you have to make it. So we'll put the needle in, grab the loop from behind, pull it through. Then again put the needle in, grab the loop from behind and pull it through. Okay, then again put the needle in, grab the loop from behind and pull through. इसी तरीके से आपने अपनी लाइंस बना ली है. सामने से नीडल डालेंगे, पीछे से लूप पुल करके ग्रैब करेंगे एंड अपने ये लाइंस बनाते जाएंगे. So this is how you have to make the lines. I'll complete it and then I'll show you how it looks. मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है. इसी तरीके से आपने बाकी की भी लाइंस बनानी है. सो once you've completed making one line, एक लाइन आपने बना ली है जब, so what you have to do is when you reach the end you have to cut the yarn को कट कीजिए and just pull through. तो ये वाला जो yarn है we'll take it to the back and we'll just weave in using a tapestry needle.
or you can just go in couple of stitches using the crochet hook as well. तो आप crochet hook से भी इसे स्टिचेस के बीच में वीव इन कर सकते हैं, या अगर आपको चाहिए तो आप टेपेस्ट्री नीडल की मदद से भी इसे वीव इन कर सकते हैं. सो यू कैन जस्ट गो इन कपल ऑफ स्टिचेस एंड जस्ट कट द एक्स्ट्रा, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू ऑफ द यार्न दैट इज एट द बिगिनिंग. तो दोनों तरफ ये यार्न रहेगी आपके पास. जब आप लाइंस बनाएंगे तो इसी तरीके से आपने इसे वीव इन कर देना है. तो मैं बाकी की भी लाइंस बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है. सो आई विल मेक द रेस्ट ऑफ द लाइंस एंड देन आई विल शो यू हाउ इट लुक्स. I finished making the horizontal lines and now I'm working on the vertical lines. मैंने horizontal lines बना ली, मैं vertical lines पे work कर रही थी. तो मुझे ये दिक्कत आई कि ये जो space है डबल क्रोशे स्टिच के बीच के space है काफ़ी लॉन्ग रहता है. तो यहाँ पे like आप नहीं कर पाओगे. तो it's better कि आप स्टिच के बीच में जाके वर्क करो. So when you try to make the stitch in between, there's a large gap, so you're not able to make it. So it's better if you go in the stitch, like not in the space but in the stitch, and then you work your lines. It'll be more easier. So I was finding it difficult to do, so I thought of sharing it with you so that you don't have this problem and you can just work easily in between the in the stitch. You have to work in the stitch. So you have to just go in the stitch, not between the stitches, in the stitch, in the double crochet stitch, and then you have to just work your lines like this. Initially it's a little difficult, but once you get the hang of it, it's really easy. So you can just keep doing this until you reach the एंड. तो इसी तरीके से आपने स्टिच के बीच में अपनी नीडल डालनी है एंड पीछे से आप लूप लेंगे एंड देन आप पुल कर देंगे लाइक दिस, देन यू कैन जस्ट स्ट्रेटन इट आफ्टरवर्ड्स. तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइंस बनाते जाना है, स्टिच के बीच में जाके लूप पुल करके इस तरीके से. थोड़ा सा डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग में होता है, बट एक बार ही आप बनाना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा. एंड make sure that it's straight. Now see, it's coming curved over here, so I'll have to undo 1-2 stitches and then I have to do it again so that it's a straight line. So I'll complete this and then I'll show you how it looks. So the base is ready and all we have to do is we have to add X's and zeros on the circles that we made, the small circles that we made. अब हमारा base ready है. अब ऐसे जो हमने 10 सर्कल्स बनाए थे, इस पे भी हमने इसी तरीके से x और ज़ीरोज़ बनाने हैं. 5 पे हम x बनाएंगे और 5 पे हम 0 बनाएंगे, और जब हम ये x और 0 बना लेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा. सी आफ्टर मेकिंग x and 0, दिस इज़ हाउ इट विल लुक. सी आई हैव मेड सम. This is how it will look. I'll show you how to do the zeros and how to do the x as well, and then our x and 0 game is ready. So we'll make the x first. सबसे पहले हम x बना लेंगे. We'll make a slip knot. Slip knot बना लेंगे पहले. Then we'll put our needle from front to back. मैंने गलती से पहले जब बेस का बना रही थी तो back to front बोल दिया था by mistake. When I was doing the lines on the base, I told back to front, but we have to put our needle from front to back and then we have to pull the loop in front, and then we'll go in the stitch में जाएंगे. From behind we'll pull the loop, पीछे से loop pull करेंगे and we'll pull it through. Then we'll go in the center, pull up a loop and pull it through. Then we'll go in the stitch, pull a loop, pull it through. Then we'll go in the topmost part and pull it through. तो ये हमारी एक लाइन रेडी हो गई है. सो वन लाइन इज रेडी ऑफ द क्रॉस ऑफ द एक्स, एंड मेक श्योर यू जस्ट पुल द yarn behind. See, and now what we have to do is we have to just tie. You can just make it proper if it's not straight. Behind now we have the tails, so we'll tie knots and make it secure. तो इसको हम 2-3 नॉट्स बांध लेंगे ताकि सिक्योर हो जाए. आपको चाहिए तो आप टेपेस्ट्री नीडल की मदद से इसे अंदर वीव इन कर सकते हैं. मैं ऐसे ही कट करके एक्स्ट्रा कट कर दूंगी. ऐसे नॉट बांध के एक्स्ट्रा कट कर दूंगी.
So if you want, you can even use a tapestry needle and weave in the ends, but I will just make knots and cut the extra yarn, and that's it. Okay, so one line is ready. Now we have to make another line like this. So we'll do the exact same like we did here. Same तरीके से we'll make a slip knot first. We'll insert our needle from front to back. I always forget this. From front to back, and then pull the slip knot. And now we'll go in the stitch first. We'll pull up from behind, pull it through. We'll go in the center, pull up the yarn, the loop from behind, pull it through. Then again we'll go in the stitch, pull the yarn through, go at the top, pull the yarn through. तो इस तरीके से हमने अपना X बना लिया. So our X is ready. Now we'll just cut the yarn like we did before, pull it through, take it to the back and make the knot. पीछे हमेशा उसको yarn को पीछे की तरफ लाके पीछे की साइड पे हम ये knots बांध लेंगे. And extra yarn को हम cut कर देंगे. So we'll cut the extra yarn from here. So our X is done. Now we have to make the circle. अब circle बनाना है, and it's the same procedure. We'll make a slip knot first. सबसे पहले हम slip knot बनाएंगे. Put the needle from front to back, pull the slip knot, and now we have to go around. तो अब हमको इसके around जाके ये stitch बनानी है ताकि ये एक circle सा बन जाए. It doesn't need to be perfect. You can just make, you can go in and just, it should be you know, around. That's it. It's not a proper circle also, it's fine to just go from one side and join it to the other. That's it. And I'm sure your kids will love it. आप ये ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को बहुत मज़ा आएगा. आजकल जैसे सारा टाइम मोबाइल्स पे लगे रहते हैं बच्चे, ये होगा तो थोड़ा टाइम मोबाइल छोड़ देंगे. So now once you're done, we'll cut the yarn from here, pull it through and take it to the back. और यहाँ पे हम जो हमारी स्टार्टिंग और एंड की yarn है दोनों को हम नॉट बांध लेंगे. So we'll just make a couple of knots here, and that's it. Cut the extra yarn from here. And your circle is ready. So this is how you have to do with the rest of the circles that you have. 5 X's and 5 zeros. And then we are ready to play our tic-tac-toe or X and 0, whatever you can call it. So this is how it's looking. Thank you so much for watching. I'm sure your kids will love it. And you can play with them and have fun. So this is how it's looking, see? Thank you so much for watching. Keep crocheting. Stay safe. Be happy. Bye-bye.